हेलो एंड वेलकम बैक। आ गए हैं हम आपके पास वापस से वीकली राउंड अप लेके। पूरा वीक बहुत एक्साइटिंग था। दो थोड़ा ट्रंकेटेड था और हमने लास्ट वीक भी बात करी थी कि ट्रेडिंग सेशंस थोड़े से वॉलेटाइल रहेंगे। एट द वेरी फेस ऑफ इट तीन ट्रेडिंग सेशंस थे। मंडे वीकली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी, एंड देन वी हैड थर्सडे सेंसेक्स की बीएससी सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी, और आज आखिरी का ट्रेडिंग सेशन। बट न्यूज फ्लो ऐसे रहे और सिचुएशन ऐसी डेवलप होती हुई दिखी। कल के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग दिखा रही थी, एक अलग ही यूफोरिया था पूरा मार्केट में। थोड़ा सा फिजल आउट हुआ, बट स्टिल आई बिलीव वीक अच्छा ही था। और अब इस वीक को कैसे समराइज किया है और नेक्स्ट वीक में क्या होने जाने वाला है, वो समझने के लिए एज ऑलवेज हम बुलाते हैं एक एक को और समझते हैं व्हाट ही हैज इन स्टोर फॉर अस। Hello, Welcome back. hello, Rachit. Thank you. How are you? I am, I was good. Now again I'm confused. 25,800 के नीचे क्लोजिंग अच्छा पहले लग रहा था। बताइए पहले बताइए दिवाली कैसे गई आपकी? दिवाली वाज गुड, दिवाली वाज अमेजिंग। इनफैक्ट पोस्ट दिवाली जो कल का ओपनिंग सेशन था वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद आज ही दिवाली बनने वाली है। बट somehow वो तो नहीं बन पाई। बट एनी हाउ देखिए, आई थिंक 26,000 के ऊपर ओपनिंग सस्टेन करना कुछ देर के लिए वो भी अच्छा था। तो अब इतना भी बुरा नहीं लग रहा है जिस तरीके से हम पोजिशन हैं। बट कंफ्यूजन रह गया। आपकी दिवाली कैसी थी? Very good, very good. My Diwali was very good. It was a good, enjoyable break. Markets तो obviously आप पिछले 2 हफ्तों का स्पिल ओवर बोल सकते हैं या जो एंटिसिपेशन रैली है, वो जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि all the time that some 10 or trading sessions that I was traveling, markets just went up and up and up, and this whole thing started from I think 24,650 odd levels, 3 weeks back now. And in 3 weeks we have seen 24,650 odd levels to I think a high of 26,100, maybe 26,080 intraday high, although we did not close above that. Uh, and now only on Friday we saw a pull down. जो आप समझिए 20, just short of 25,800 we closed the week. तो इससे क्या, जैसे मैंने लास्ट वीक आपको बोला था कि टेक्निकली मार्केट्स आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेस। ये टेक्निकली है, तो इसलिए मैंने बहुत कैटेगोरिकली बोला था कि ऐसे नॉर्मली आई से दैट कॉशन कॉशन रहिए, कॉशन रखिए, गैप डाउन भी हो सकता है, बट I very clearly said that I don't see any reason why I should say that the next week should be down, because बहुत ज्यादा टेक्निकल स्ट्रेंथ थी मार्केट में। And obviously because it was a short week, we kind of put in more force on the fewer uh, days that were available for trade. तो वो है the anticipation on US trade deal. I don't know, see, I have not heard of anything substantial or solid from any side as of now. But yeah, what I read online is that there was an article in Mint also that there is a chance that US and India may reach into a trade deal agreement. uh, it is a possibility, जो 50% टैरिफ की बात है जो लगा हुआ है अभी, it's a possibility that comes down to 15% or 16%. Okay, so उसके एक एंटिसिपेशन में ये रैली, now they are saying that this rally is on that anticipation. Now if that was to be true, right, in 3 weeks we have seen 24,600 to 26,000, 26,100. That's about 1,500 points on Nifty, which is a massive jump for in a very very short time, right? Now ये जिस भी न्यूज के बेसिस पे रैली है, एंटिसिपेशन पे रैली है, at some point markets would have slowed down and started to wait for those news to catch up.
कि भाई हम एंटिसिपेशन पे चले जा रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि हम मुड़ के देखेंगे कि भाई न्यूज आ भी रही है कि नहीं आ रही है. तो आई थिंक व्हाट that was one of the reasons that Friday saw a little bit of correction. Add to that, again, it's the weekend. 2 दिन दुनिया में क्या होगा, क्या अनाउंसमेंट आएगी, पीपल डू नॉट वांट टू गो वेरी हेविली इन्वेस्टेड इनटू अनसर्टेनिटी. Uh, I would like to get this thing. Why do you sound like you are a bit apprehensive till now? कि US India trade deal अभी भी आपको नहीं लग रहा है that it will go through, because the way you're sounding कि रचित, anticipation पे चल रहा है and then just we need to check. So are you still under an impression? Yeah, you still have some apprehensions in your mind that the trade deal will not go off that easy as we are expecting it now to be like? रचित, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 6 महीने पहले या 7 महीने पहले, जब डोनाल्ड ट्रम्प व्हेन ही assumed presidency, and in April there was a you know big fear of a trade war globally. वो जो atmosphere था, I remember that time, uh, uh, a statement came in from, I think it was Mr. Piyush Goyal, if I'm not mistaken, if I remember correctly. A statement came in that we have 90 days before the tariff comes in play. And he was certain that time that we will reach a trade agreement before that. The tariffs came in 1st of August. We are sitting in the end of October. There is no sign of trade deal. तो अब आप बोलिए कि मेरा apprehension जायज है कि नहीं है. The apprehension jais, and to my surprise, I was just checking it, and just now, some 10 minutes back, Piyush Goyal ji has again given a statement that India's interest India's interest will be protected. And that was the reason, because while I was talking to you, I was also searching for some news. So that just came in that India's interest will be protected and we will not just, get in like this. So both the things I clubbed understand. together, I believe I that. understand that. I understand that, but Rachit, in view of all of this, and looking at the 6 month or 8 month history on statements being bounced off from each side and taken back, tariffs, you know, levied and taken back and rolled back and all that, there is absolutely nothing that you can be certain of. So it is always I think it's a very prudent move in this market to be a little apprehensive about everything. But we So, had numbers, and the numbers were relatively better, I believe, looking at Reliance and some of the banks which have yeah, presented the numbers. So, yeah. if we throw some light on them, how do you think, if we not throw some light on them, if we focus on them, how do you think we are planning to pan out for the next week then? Yeah. So numbers as such have, I will say they we have improved, no doubt about. Q2 is definitely better than Q1. Okay, a lot is going to come up in Q3. I feel if you really want to see the impact of that fall in GST, the said increased in consumption, जो हम ये अभी सुन रहे हैं एक सेक्टर से, ऑटो सेक्टर से या किसी सेक्टर से, कि इतनी सेल्स हो गई है, इतना अच्छा मार्केट रहा है, ड्यूरिंग पूजास एंड दिवाली. When all of this comes into the balance sheet and reflects in the quarter numbers, which will be, I believe, in December end. Uh, so I think that would be a very crucial thing to watch. Numbers आप बोल रहे हो, numbers अच्छे आए हैं, no doubt about it. A lot of banks have, I think SBI, I was just going through, SBI has just missed their estimates, but most big banks have done very well. Most IT companies are running again on purely on this anticipation of US deal. अगर आप देखें लास्ट इस पूरे वीक में सबसे बड़े लीडर्स गेनर्स ही इन्फोसिस, एचसीएल और टीसीएस है.
तो so that being the case, numbers का अगर देखे जाए तो right now it is good, which is why we are not going down. But to say that these numbers are translating, see, 4-5 क्वार्टर खराब होने के बाद एक क्वार्टर अच्छा हो तो अच्छी बात है, no doubt about it. It can be a result of boost also, but we have to see that, you know, after flattening out, are we on the upward trajectory? तो अगर हम जैसे एक क्वार्टर अच्छा देते हैं एंड हम उसको सस्टेन करते हैं, दूसरा क्वार्टर भी अच्छा देते हैं, तो then it will be something that we can, you know, count upon. Varna, there can always be an anomaly that, you know, one quarter is good, the other quarter we are back. And So that will give more damage to the system in comparison to what we were. yes. और एक और चीज है रजत, प्लीज सी वीजा भी क्या है, अगर हमारे 4 क्वार्टर्स या 5 क्वार्टर्स बैठ गए हैं, रादर हाँ 5 क्वार्टर खराब गए हैं, और फिर हमारा क्वार्टर एक अच्छा आया है, बट इस पूरे उस चक्कर में पिछले 5 क्वार्टर और 6 क्वार्टर में देख लीजिए, वी आर क्लोज टू ये पूरे पीरियड का हाई. आप मार्च 2024 से सितंबर 2025, दैट्स 6 क्वार्टर्स, करेक्ट, राइट? अब मार्च 2024 से सितंबर 2025 में 26,277, which is the life high, is the highest point. You agree? Where are we right now? Within 1% of that high. तो अब 6 क्वार्टर में 5 आपने खराब रखे हैं, एक अच्छा है, वो भी स्लाइटली, वो भी कुछ ऐसा अच्छा नहीं है, एंड वैल्यूएशन वाइज हम इस पूरे पीरियड के टॉप पे बैठे हुए हैं. Now with this perspective, do you think we are at high valuations? But don't you think the time-wise correction triggers also play the role that the markets were not performing, and that was the reason we were correcting time-wise? Time-wise, yes, I agree. But अगर ये जो मतलब आप समझिए ये क्वार्टर जो अच्छा गया है, ओके, इसके एंटिसिपेशन में हमने पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से जो रैली आई है, इसके एंटिसिपेशन में हमने खींच दी है. So we, even if this quarter has gone up, this quarter is good news, which means the fundamentals are catching up. We have already escalated the valuations. And also so now, we have to see the fourth quarter for the confirmation. Of course, वो उस पे बाद में आते हैं, but point ये है कि at this point in time, हमारे fundamentals ऊपर जो आए हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि उसके बेसिस पे अब रैली आएगी, उसके बेसिस पे जो रैली आनी थी आ चुकी है. So now if you are saying that, you know, why markets are not sustaining at this level, is because that, you know, maybe some companies or, you know, may have not as good results. Markets have always seen, markets in the past, I don't know, 4 or 5 years is what I have noticed, have always moved up ahead in anticipation of all the events that are going to happen in the next couple of quarters, maybe, right? And then slowly, when the events actually unfold, it gauges how much deviation it is from the path. And if there is a major deviation, it sees the correction. Otherwise, it sustains. At any given point of time, the market needs new fodder for the which is the new events which are going to come up in next 2 quarters. अब मैं अगला 2 क्वार्टर या अगला 1 साल देख रहा हूं, उसमें ग्रोथ है तो मैं यहां से ऊपर जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा, वरना यही लेवल रहेगा, पड़ा रहेगा यही लेवल. Then when you see, when if you remember, हमने 1.5-2 महीने में हमने एक पीरियड देखा था जो, you know, 500 पॉइंट या 600 पॉइंट निफ्टी में घूम रहा था 6 हफ्ते, वो वही टाइम था. Well, the pendulum movement was happening wherein the middle of the pendulum was, I think, 24,600 level was, right. और आप जानते हैं 600 ब्रेक करने के बाद ही ये रैली आई है जो आई है. 24,600 2-3 बार टेस्ट करके जब नीचे गया है, फाइनली जब उससे ब्रेकआउट दिया है, तब जाके ये रैली आई है 1,500 पॉइंट ऐड.
हुआ है निफ्टी पे। तो अब नेक्स्ट वीक क्या करने वाले हैं? देखिए नेक्स्ट वीक अगेन आई विल से द सेम थिंग, आई डोंट सी अ रीजन व्हाई मार्केट शुड बी नेगेटिव नेक्स्ट वीक। अगेन ट्रेड वाइज वी आर वेरी स्ट्रांग। आई एम ओनली होपिंग फॉर वन थिंग, ये जो इतना एंटिसिपेशन चल रहा है ट्रेड डील का, कुछ सर्टेनिटी किसी साइड से, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट जो रिलायबल हो वो आ जाए तो ये थोड़ा सस्टेन करेगा। मुझे like you said, like you told me that you are sounding apprehensive. I am not very right now. I am not at a level where I don't have a very high degree of surety or something like that coming in. So in that absence, we will remain here. Broadly speaking, टेक्निकली 25,800 के ऊपर बंद होता तो मैं ज्यादा पॉजिटिव होता, बट 25,795 इज नॉट अ, मतलब इट्स नॉट 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे, आप टेक्निकली उस जोन में ही हैं। तो मुझे विल इट टच द फ्रेश लाइफ हाई? अगेन आई डाउट, नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द न्यूज फॉलोइंग। न्यूज फॉलो करेगी, अगर आ जाता है स्टेटमेंट तो आई कैन अश्योर यू फ्रेश हाई इज गारंटीड। 26,277 will be broken अगर न्यूज आती है तो। न्यूज अगर नहीं आएगी, which in my opinion has got a higher chance, मोर लाइकली we सिचुएशन। हाँ, we will remain in this range। आप एंड देखिए दैट we are close to life high। It's like I think मैंने पहले भी आपको या किसी और को कहीं को तो एग्जांपल डेफिनेटली दिया है, जब आप एवरेज ट्रैक करने जाते हैं तो आप एमेच्योर या थोड़े बड़े लेवल के भी हैं, थोड़े से भी लेवल के ना, तो बेस कैंप तक ट्रैकिंग इजी होती है। बेस कैंप से जो समिट होता है, जो लास्ट का पार्ट, दैट इज द मोस्ट टफ। तो हम 25,700 25,800 where we are 2%, 2.5% away from life high, दैट इज ओके, वहां तक तो आ गए हम। पर ये जो लास्ट 2.5-3% कवर करना होगा, दैट विल बी वेरी टफ। You really need, not only you need good numbers in this quarter, Rachit, you need to see, the market needs to see future growth prospect। अगला 2 क्वार्टर ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, ग्रो करेगी, तब तब जाके वो लेवल्स पहुंचेंगे और वो लेवल्स ब्रेक करेंगे। वो लेवल्स इतना इजी नहीं है ब्रेक करना, नॉट ऑन दिस, जस्ट स्पेकुलेशन पे नहीं टूट सकता है वो लेवल। एंड व्हाट विल बी द सपोर्ट दैट वी शुड लुक एट? आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू द सपोर्ट। सो मेरे को यहाँ से ज्यादा डाउन साइड नहीं लगता। 100-200 पॉइंट आप समझिए, 25,600 मान लीजिए, 200 पॉइंट का गैप डाउन। एनी बैड न्यूज माइट गिव एन इंट्राडे करेक्शन और इंट्राडे गैप डाउन, बट अगेन आई डोंट सी 25,600 ब्रेकिंग डिसाइसिवली, वो मुझे नहीं दिखता है। तो शॉर्ट रेंज में बता रहा हूँ, 25,600 नीचे, 26,000 ऊपर, 400 पॉइंट की रेंज रहनी चाहिए अगले वीक, इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग substantial। As always, it was amazing talking to you and understanding how the markets will behave in the coming week. Hope to catch up with you next week. And till then, thank you, bye bye, and have a happy weekend. Thank you, have happy weekend।